is 17. So the topic name is thin film interference. Now, what do you mean by thin film? Probably I told you about the CD last time. मैंने दिखाया था? Yes, no. Yes, sir. No? Okay. Let me show you. This is a CD I have. This is old CD. Okay. I hope you can see this. And when you look at this, it appears colorful, and the color is changing. Right? You can see this. Yes, sir. Okay. So why this color is changing? If I shift it, because the light, whatever light you are using, is same, the white light from the top. Okay? So when I shift this, when I tilt it, then you can see different colors. Why is it so? Since you are from computer engineering, I just showed you CD so that you will get some interest in it. There is a thin film that is coated on this CD. Okay. The same reason is for the butterfly. So the butterfly shows very beautiful colors. So that is because of this thin film interference. So you can take the example of CD, you can take the example of butterfly, and you can take the example of soap bubble and oil on the water. When can you see this oil on water? Naturally. Have you ever seen this? Yes, sir. In monsoon. In monsoon, yes. So whenever your vehicle moves uh, through a pothole, so some of the oil may enter into the water. Okay? जो ऑयल का जो एक थीन फिल्म बनता है देन दैट विल गिव यू डिफरेंट कलर्स ब्यूटीफुल कलर्स ओके शायद आपने बचपन में इसको ऑब्जर्व किया होगा अब तो आपकी स्पीड ज़्यादा ही होती है तो आप वो ऑब्जर्व नहीं करते ठीक है सो ऑल दीज थिंग्स these are the examples of thin film also when you talk about thin film then you can talk about the thin film cover maybe on mobile phone or maybe on any screen. Okay, so that is also very important. So it should not be something like that will stop the light coming out of the mobile screen. That will stop the light coming out of the say TV screen. Okay, so you will have to choose a proper thickness of the thin film. So it depends on the thickness. If the thickness is slightly more or less, then the film may appear black. And that is one of the reasons that you can have the you say uh, thin films on the car windows. Okay. Just a minute. So there are numerous applications of this thin film. Now let us understand what does this thin film means. How thin it is. Thin. How thin it is. Generally, it is defined as 5,000 angstrom unit. Okay. If the thickness of the thin film is 5,000 angstrom, means how many nanometer? 5,000 angstrom is how many nanometer? Anyone?
नहीं, 10 की पावर -1. 10 to the power minus 1, yes. That means you have to multiply by 10 to the power minus 1. Because this 5000 angstrom is 5000 into 10 to the power minus 10 meter. That is what we know. What is angstrom? Okay. Now I can write this as, say, 500 into this 10. So 10 into 10 to the power minus 10. That becomes 10 to the power minus 9 meter. Now we know 10 to the power minus 9 is nanometer. It is 500 nanometer. Okay. So how much is this 500 nanometer? कितना होता है? We don't know. Nanometer कितना होता है? We don't know. We can convert it into micrometer also. So nanometer is this 500 into 10 to the power minus 9. So I just split this 10 to the power minus 9 in 10 to the power minus 6 and 10 to the power minus 3. Okay. ये इसको मैंने split कर दिया. 10 to the power minus 9 को मैंने 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 6 लिख दिया. Why? Because I know this is 10 to the power minus 6 is micrometer. So 500 into 10 to the power minus 3 कितना आएगा? 0.5. 0.5. Right. 0.5 and this is micrometer. Now, how thick is this 0.5 micrometer? A typical thickness of the thin film. Okay. What is the thin thing that you know and you can see? Anyone? Plastic bag. Yes. Plastic. Plastic bag. Okay. So, what is the typical thickness of plastic bag? Hmm? 0 point something micron. नहीं, इतना छोटा नहीं होता. 50 माइक्रोन होता है. और एडवर्टाइज में लिखा भी होता है कि 50 माइक्रोन एंड बिलो 50 माइक्रोन आर बैन नाउ. ओके. 30 माइक्रोन के आते थे पहले, तो वो अभी बैन हो गए. तो इट शुड बी एटलीस्ट 50 माइक्रोन. ओके. ये ह्यूमन हेयर कितना थिक होता है? एनी आइडिया? मे बी गूगल विल टेल यू एग्जैक्टली कितना होता है. क्योंकि मेरे लिए सबसे मिनिमम वैल्यू होगी. ऑफ कोर्स इट विल वेरी, बट यू कैन हैव अ रेंज ऑफ दिस थिकनेस ऑफ द थिन फिल्म. कितना होता है? जस्ट चेक विद गूगल. Google taking too much time. Sir, approx 70 micron. 70 Micron. micron. Okay. This is about 70 micrometer. Okay. So we can just approximate this at 100 micrometer range. Maybe for some it will be less, some it will be more. Okay. So this thin film that we are talking about is much thinner. It is almost 200 times thinner than uh, the human hair thickness. Okay. Right? Yes, no. या यस बोलो या नो बोलो. नहीं. 0.5 डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा? 200 ही आएगा ना. 1/200. 2000 पक्का. Okay. If Parishit says 2000, let's consider 2000 times. Okay. This is approximation. Okay. 200 by 0.5. Yes. It will be not 2000. 100 by 0.5 मतलब 0.5 मतलब half. So 100 into 2. Simple. 1 by 0.5. नहीं. नहीं. 2000. ठीक. 2000. ठीक. Half each. Okay. So approximately it is 2000 times smaller than the human hair. Okay. Now if you have played
with the soap bubble. Maybe I told you about soap bubble in previous lecture. So how many of you have created the soap bubbles? बनाया आप लोगों ने कुछ? कितने लोगों ने बनाया? किसी ने नहीं बनाया? Okay. Vishnu, Pranjal, Chanchal. Okay, good. Payal, two more. Okay. Dheeraj also. So that is what this thickness that we are talking about. Okay. That thick is the thin film. It appears amazing, the thickness of the thin film. Okay. But that is the thickness we are talking about. And now we'll see whether this thin film looks bright or dark or anything else, depending upon the situation. So let me just draw this first. Okay, you can draw along with me. So this is the upper surface of the thin film, and let me go slightly below, and this is the lower surface of the thin film. Okay. Now we are just exaggerating this, and now we will write the thickness of the thin film, and the thickness of the thin film is T. So let me just show it by say different color. So this is the thickness of the thin film. So this value is T, small t. Okay. Now let us consider that a light is incident on this thin film, say approximately at 60 degree. Okay. Now this angle what I am taking is with respect to the surface. With respect to surface. Now this is the biggest mistake, that you are using the pencil or the pen from bottom to top. That is not the proper way. But here it doesn't make any difference, so I am just using it. And now let us put some normal here. So let's take the normal with green color. Okay. Are you getting this construction? So this is the incident line A and say B. So it is incident at point B. Now what will happen at point B? This is the medium. This is a thin film. Here. This is a thin film. Okay. So X dash is the upper surface of this thin film. Sorry. X dash. And say Y dash is the lower surface of the thin film. Means whatever we are talking about this surface and the other surface. Have you joined with personal ID? Now this surface is the upper surface, X dash, okay, and inside of the other surface, not outside, inside of the this other surface is the Y dash. Okay, that is how we are exaggerated. And this thin film thickness is approximately half micrometer. Very, very thin. Now what is happening here? Now at point B, it is expected that we will have the reflection. Okay. What is the angle of incidence here? Suppose this M and N are the points on the vertical. What do you call this? MN को क्या बोलते हैं? MN को क्या बोलते हैं? Normal. Normal. So what is the angle of incidence? कौन सा angle of incidence हो जाएगा? 30 degree. 30 degree. Okay. Let me show the two different angles. One is MBA and the other one is ABX.
So which one is the angle? MBA. MBA. Right, because we are taking the angle from normal always. This is the angle of incidence, and therefore angle of reflection will be कितना होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम रहेगा, जितना ये है उतना ही ये है, राइट? दैट इज Yes, sir. व्हाट टोल्ड अस. किसने बताया था ये? किस साइंटिस्ट ने बताया था? Snell's law. Snell's law. Oh. Now, suppose this is 30 degree. कैलकुलेशन के लिए हम देख रहे हैं. So if angle of incidence is 30 degree, say mu, the refractive index is 1.2. What is the angle of R? Refraction. Refraction यहाँ पे जो आएगा कितना आएगा? Let's calculate. So we know that mu equal to sin I divided by sin R. Okay, and therefore sin R equal to sin R divided by mu. This is sin 30 by 1.5. Sin 30 कितना होता है? 1/2. 1 by 2. So it is 0.5. 0.5 divided by 1.5. So this is 5 by 15. So 5 3 is 15. 1 by 3. 0.33. So what is the sin of 0.33? That will be an angle R. कितना आएगा? You have the calculators? 19.268. Okay, 19.26 degree. ठीक है. Now let us this is very difficult, 19.26. So I'll just limit to 20 degree. कैलकुलेशन के लिए हमें ड्रॉ करने के लिए आसान हो जाएगा. तो 20 डिग्री मतलब यहाँ एंगल कितना लेना पड़ेगा मुझे? This angle is with horizontal. Okay, this will be something like this. Angle of refraction, I will show with red. It reaches here, and what will happen with this line now? Say this is BC. Okay. Now there are two chances. One is it will reflect back inside the material or the medium, and it will refract into the air, because this is air, this is air. दोनों air ही. This is air, this is air. Like this. इस साइड में भी एयर है, इस साइड में भी एयर है. ठीक है, तो वो दूसरे साइड में भी जा सकता है. बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन राइट नाउ. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस transmission of the light. We are interested in knowing where it will reflect back. Okay. It will reflect back here. यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा. ठीक है. इसके बाद यहाँ पे वो रिफ्रैक्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल दिस इज डी. नाउ फ्रॉम हियर इट विल गो इनटू एयर, and it is obvious that it will be parallel to this line. Because if you take the refractive index of say air with respect to the medium, then it will be 1 divided by 1.5. And what is the angle you talk about? It will be now same, just like this, parallel to this. यहाँ पे एक कलर आ जाएगा. ठीक है ना, ध्यान में आ गया. दिस इज ऑप्टिक्स. लर्न इट. 12th में भी ऐसे आपने किया था. नाउ if you want to find out equivalent point of D on BC, what should you do? Equivalent point मतलब same phase वाला या constant phase वाला. So what you have to do is you have to just
find out perpendicular. ज़्यादा होगा. Okay, this is quite. You just draw a perpendicular here, perpendicular from here on this line BC, ray BC. Suppose this meets at say point M. Okay. So now, if we consider the point D and M, if these 2 points are in phase, then all the alternate sorry, uh, next to this, all of them will be in the same phase or same phase difference. Suppose D and M are out of phase, then every point on this line, not this is not D, this is E. So every point on say D and MC parallel to this parallel line जो आएंगे, सब उसी फेज डिफरेंस है. ठीक है, सेम फेज डिफरेंस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर यहाँ पे सपोज क्रस्ट है और यहाँ पे क्रस्ट है, ठीक है, तो देन देयर विल बी नो फेज डिफरेंस. अगर मान लो यहाँ पे क्रस्ट है, मतलब ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया? 30 डिग्री. तो 30 डिग्री यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा. ठीक है, आगे ध्यान में. Now, how to find out this, the phase difference between these two, or the optical path difference between these? What is path difference? Path difference क्या होता है? So path difference means there are 2 paths of the light, and we have to just find out the difference between these 2 paths. Okay. Suppose you want to say Amravati from Varda. So what are the options? आप कैसे जा सकते हैं? Do you know the roads? By road. हाँ, कौन सी रोड से जाएंगे? एक ही रोड है क्या? वाया कौन सा गाँव वगैरह वगैरह? If you need, you can take the help of Google Maps. Okay. So there are 2 or 3 options. One is via Pulgaon. Okay, Pulgaon, Daman, not Damangaon. Pulgaon and then Chanduli. Okay. So it is approximately 105 kilometers. And if you take via Arvi, Talegaon and then Amravati, then it takes almost, for example, 115 degree. Sorry, 115 kilometers per degree. तो एक साइड से आप 105 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं, तो दूसरी साइड से 115 कर रहे हैं. तो व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस? आई होप आई एम ऑडिबल. 10. हाँ, 10 किलोमीटर. इट्स वेरी सिंपल. +10 होगा या -10 होगा? +10. सर आपने पहले कौन सा बताया उस पे डिपेंड करता है. नहीं, डिफरेंस का मतलब होता है हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव. ओके, रिमेंबर. कितना डिफरेंस है निगेटिव में नहीं बताएंगे, विल ऑलवेज से पॉजिटिव. ठीक है, आपके और आपके भाई के एज में कितना डिफरेंस है? निगेटिव ठीक है, नहीं, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. आपका भाई छोटा है सपोज, तो आप आपके एज से भाई की एज माइनस करोगे. बड़ा है तो उसके एज से आपकी एज माइनस करोगे. ठीक है, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. एनी डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है. सो हियर वी टेक 2 पाथ्स. कौन से पाथ है आप? सो वन पाथ इज से B to C and C to D. दिस इज वन पाथ, एंड अदर पाथ इज B to M. ठीक है, में नहीं, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिख रहा है लेकिन नहीं है. ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा दिख रहा है, बट दैट इज नॉट बिकॉज द थिकनेस ऑफ दिस थिन फिल्म इज अबाउट 0.5 माइक्रोन.
very small, very small. Okay, and therefore we can just write that you take this distance as BC plus DE, sorry, BC plus CD minus BM. Okay, are you getting this? नहीं, आप ऐसे ही जा सकते हो. मान लो कि यहाँ से आप यवतमाल गए, फिर वहां से अमरावती गए. ठीक है, यू कैन. एंड दूसरा ऑप्शन है आप डायरेक्ट अमरावती गए, जो भी रास्ता है वो. ठीक है, देन देयर विल बी अ पार्ट डिफरेंस. So here also it is something like D is Varda and C is Yavatmal and D is Amravati. Okay? And parallel to this BM, it is a short path. Okay, straight path, not short, straight path. Okay. Now, if BC and CD, the light is not traveling in air, whereas in case of BM, it is traveling in air. So we have to write here that the path should be BC plus CD in medium, whereas BM is air. Okay. तो यहाँ पे वेलोसिटी अलग रहेगी, यहाँ पे वेलोसिटी अलग रहेगी. And therefore, if they are taking a similar time, then obviously, since the velocity is less, it will travel more distance if it is given chance to travel in air. अब ये कैसे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. ठीक है, there are two marathon players. One is practicing on tar road or simple road, जो भी है मिट्टी वाला, and the other one is traveling on or the practicing on sand. Suppose both are supposed to maintain a speed almost constant. सभी मैराथन प्लेयर की स्पीड ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही होती है, थोड़ा बहुत 19-20 फर्क होगा. ठीक है, if they run for say 5 minutes, who will win in this case? Number one, number two. Number one, number two. Who will win? I think this is a very simple question. Number one. Number one will win. It's very obvious. It is straight road, tar road. You don't have much friction. सैंड पे आपका स्पीड कम हो जाता है, आप कितना भी एफर्ट लगाओ स्पीड कम ही रहता है. ठीक है. Now, if they practice for say 1 year or 2 years, okay, and then now I change this to same situation, okay, maybe tar, maybe, then in that case, who will win? Number two. Number two, because he is now running in the similar situation that of one, but previously when he was trying on sand, his efforts were more. ठीक है, अब आप इसको कंसिडर करो कि दिस इज एयर एंड दिस इज मीडियम. ठीक है, सो एयर में स्पीड कितना होता है इसका लाइट का 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. और फॉर एग्जांपल इन मीडियम if refractive index is say 1.5, then the speed will be 2 into 10⁸. ठीक है, because mu equal to c by v. C is speed in air and v is the speed in medium. तो यहाँ पे इसका स्पीड कम है, लेकिन इसको हम अगर एयर में जाने के लिए अलाउ करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल पाथ. ये हो गया आपका ज्योमेट्रिक पाथ. ज्योमेट्रिक मतलब सिंपली ज्योमेट्री जो जैसे दिखाते हैं वो पाथ. फॉर एग्जांपल ये सपोज नागपुर है, ठीक है, और ये मुंबई, एंड देन यू जस्ट फाइंड आउट द डिफरेंस डिस्टेंस बिटवीन दिस टू. ओके, approximately suppose 600 kilometers. But actually, is this distance in Mumbai and Nagpur? ऐसे है क्या? नहीं. It go like this, right? And then that will be about 700 kilometers.
You'll have to think about these problems. Okay. Here also, in this case, our case, here the light is traveling BM distance in air, whereas BC plus CD in medium. So if it is allowed or you just remove the medium, then in the same, it is not clear, but I am using mobile phone. I mean, voice, I am using mobile phone. I don't have any other option. Okay, let me stop तो and थोड़ी सी वॉइस लैग हो रही है. हाँ लैग तो होगी because on mobile you don't have strong network. You don't have strong network. ठीक है, तो मैं धीरे धीरे बोलने की कोशिश करता हूँ so that you will find lagging is slightly less. ठीक है. So what I was telling that अगर ये BC और CD जो है वो मीडियम में ना होके एयर में ट्रैवल करता है, तो जो ओरिजिनल डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहा है BC प्लस CD, इससे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा या कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? ज्यादा ज़्यादा करेगा. ये एंड कितना ज़्यादा करेगा? कितना ज़्यादा करेगा? Optical part difference, that is what is called as optical part difference. So optically it will travel mu times more, 1.5 गुना ज़्यादा चलेगा. ये देखो यहाँ पे स्पीड इतना है, यहाँ पे स्पीड इतना है, स्पीड उसका 1.5 गुना बढ़ गया तो डिस्टेंस उतना ही वो ट्रैवल करेगा सेम टाइम में, राइट. तो म्यू BC प्लस CD माइनस BM, और दिस इज व्हाट वी हैव टू. ये एयर में है तो ठीक है, वैसा है वैसा है. दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट कि हम ये क्यों कर रहे हैं. ये इसलिए कर रहे हैं कि ये मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, तो दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं एंड देन विल सी वेदर द फेज डिफरेंस एट D and M is say 0 or 180 degree or something else. Depending upon that, we'll see that this thin film will appear something like that. Bright होगा तो bright, dark होगा तो dark. तो उसकी condition क्या है ये हमें find out करना है. और after this there is only trigonometry. Okay. Here the physics ends and mathematics starts. Mathematics क्या है इसमें? Now we have to find out the value of BC. Okay. So to find out the value of BC, any doubt, any question? So what we do is we just draw perpendicular point from point C. You can call it as normal also because it is the same. So I just draw this perpendicular like this. Now, if this is the angle of refraction, R, what will be the angle? This and this, both will be same. Now I have used say N here, M भी use किया and P कर ले. So CP is perpendicular to say BD. So this angle now NBC is R. So what will be the angle BCP? Angle BCP कितना होगा? 30 degree. कितना डिग्री? 30? Yes, sir. 30 क्यों होगा? सर वो corresponding angle इसलिए. नहीं ये तो 20 है ना. R is 20. यहाँ पे हम find out R is 20. So will it be R or I? I 30 है. So this one will be same as that of I. 70 degree. 70 तो बिल्कुल नहीं लग रहा.
सर आप बीसी एन के बारे में बोल रहे हैं। BCP, ये वाला, ये ग्रीन से दिखाया ना मैंने, वो। बड़ा कर दो इसको, ये देखो सर ना, 20 डिग्री 20। 20 डिग्री, 20 बिकॉज सेम R और R, ठीक है, ये भी R हो जाएगा। नाउ इन दिस ट्रायंगल BCP, वी नो द वैल्यू ऑफ CP। CP की वैल्यू कितनी है? CP की वैल्यू कितनी है? हाँ, 1.5। नहीं, ये 1.5 तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। T. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज थिकनेस ऑफ द थिन फिल्म, दैट इज T, ठीक है। Now we know the value of CP, we know the angle R, and I want to know the value of BC. So which trigonometric relation I should use? Which trigonometric relation I should use? BC value निकालनी है, Cos theta. cos theta. So cos R, in this case, this will be cos R. So cos R will be equal to कितना? BC upon CP? itu mah उल्टा, CP upon BC. Is that right? This Yes, is the sir. angle and the adjacent side is CP, hypotenuse is BC. So this is CP upon BC. But we know CP is T. This is T upon BC. And therefore BC will be equal to, ये इधर ले लिया, ये उधर गया, तो T upon cos R. Now BC is similar to CD, क्योंकि ये भी एंगल R है, ये भी साइड T है. Again you can take cos R here, and again it will be the adjacent side upon hypotenuse. In this case CD will be the hypotenuse, and therefore this value will be same as that of CD. ठीक है, इतना समझ में आ गया? Yes, sir. So BC Yes, equal sir. to CD, BC equal to CD equal to T by cos R. ये मैं नीचे लिख देता हूँ. So in triangle BCP, that is what we have calculated. BC equal to CD equal to T divided by cos R. So we know the value of BC, we know the value of CD, and therefore we can write the optical part difference OPD equal to mu times BC plus CD. BC भी T cos R है, T by cos R है, CD भी T by cos R है. So it will be 2T by cos R minus BM. ठीक है? This is equation 1, this is equation 2. Now we will find out the value of BM. Yeah, BM की value में find out करना. Now you can take any angle, this one or this one, doesn't matter. Okay, I. So what will be this angle? BDM कितना आएगा? BDM कितना आएगा? नहीं? Sir 30 degree. Yes, it will be 30 degree because this is 30 degree और ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 70 हो जाएगा, ये 30 आएगा. दिस इज 90 माइनस आई, एंड देयरफॉर दिस इज आई. ठीक है, ये तो मैंने एग्जांपल ले लिया 30 और 20 का. यू कैन टेक एनी एंगल. यू विल टॉक अबाउट ओनली इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर. सो हियर if I know this R value, I know this T value, so I can just find out BP value and then PD value. Okay, so we know the PD value and we need to find out the BM value. Okay, so I should take the BM divided by BD or BD divided by BM, whatever it be. So say BM divided by BD, कौन सा रेशियो हो जाएगा?
BM by BD कितना आएगा? tan Yes, it is Sin I. tan I. मैंने लिख दिया, सही है tan I. Yes, sir. बोल रहे हैं ये एंगल है, इसके सामने की साइड लेके, Sin I है सर. हाँ क्या है, कॉस है, सर sin I रहेगा. साइन है रहेगा, ये अपोजिट साइड है ना बी, तो अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया हाइपोटेनस, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज साइन आई. ठीक है. नाउ आई वांट टू नो द वैल्यू ऑफ बीडी, तभी तो मुझे बीएम की वैल्यू मिलेगी ना. तो बीएम इक्वल टू बी डी साइन आई. Okay. Now we want to find out the value of BD, and we know BD equal to कितना आएगा, BP plus PD. Very simple. Now we know these two angles are same, and therefore BP must be equal to BD. Sorry, PD, and therefore I can write this as 2 into BP. लिख सकता हूँ? Any doubt? Any question? Now this triangle, if we want to find out the value of BP, but we know the value of T. Okay, so I can take the relation of say BP by क्या है ये नीचे, see BP by PC or PC by BP, what it means. So let me write BP by PC. ये क्या आएगा बताओ, कौन सा रिलेशन है ऑफ आर? Sin R. पक्का? So tan R. Yes sir. Yes, Tan sir. R. Tan. So this is what is this? This is opposite side divided by adjacent side, not hypotenuse. So opposite upon adjacent is tan. So this is tan R. Okay, and therefore BP equal to PC tan R. PC tan R. Now what is PC? PC is T. Is T tan R. ये लिखते वक्त थोड़ा सा संभाल के लिखना, T और tan दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रखना है. ठीक है. Now when you okay, now we have the BP value and PD value is also same. So this is nothing but BP equal to PD equal to T tan R, and therefore BD equal to 2T tan R. ठीक है. Now if BD equal to 2T tan R, then BM equal to, यहाँ से मैं BM लिख लेता हूँ. So what is the value of BM? BM equal to BD. BD is 2T tan R into sin I, यहाँ पे into sin I. Now I don't want this equation into I. This is R here, and then let me write this here and then we'll solve it. Okay. So OPD equal to, OPD is, what is OPD? OPD क्या है? 2T tan R into sin I. OPD is optical part difference. Now this is the equation what we have. Optical part difference is equal to 2 mu T upon cos R minus 2T tan R into sin I. I don't want this sin I. I want something in say R. तो क्या करना पड़ेगा? Yeah. लैग हो रहा है क्या बहुत?
Okay, let me tell you. Is mu equal to sin I upon sin R? And therefore, what is the value of sin I? Sin I will be mu sin R. Mu sin R. So sin I की value ये आ गई. So we can put the value here. So what we get is 2 mu t divided by cos R minus 2t tan R multiplied by sin I. Sin I is mu sin R. So I can write this as 2 mu t divided by cos R minus 2 mu इधर ले लिया. So 2 mu t and tan R is sin I upon sin R. Sorry, sin I upon cos R. That is the tan value. Sin R upon cos R. And ये sin R एक नया आ गया. So this is sin square R. आ गया ध्यान में? और this is equal to 2 mu t by cos R कॉमन. ये कॉमन निकाल सकते हैं. यहाँ पे क्या बचेगा? फर्स्ट टर्म विल बी ओनली 1 माइनस सेकंड टर्म में 2 mu t अपॉन cos R कॉमन निकाल तो बचा sin square R. Now what is this 1 minus sin square R? Cos square R. Cos square R, not cos square R. तो cos square upon cos कितना आएगा? एक cos यहाँ पे बच जाएगा. So this is 2 mu t cos R. और this is optical part difference. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? Any doubt? Any question? ठीक है. Now, at this stage, we cannot take this optical part difference as it is because फिर से मैं ये इस डायग्राम पे चला जाता. ठीक है. Now you see, there are two different reflections. One reflection is occurring at point B. यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन हो रहा है जो BM की डायरेक्शन में जा रहा है. तो दूसरा रिफ्लेक्शन हो रहा है C पॉइंट पे जो कि CD के डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है. What is the difference between these two reflections? Are they same or different? ये दोनों रिफ्लेक्शन अलग अलग है क्योंकि दिस रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस एट पॉइंट बी फ्रॉम डेंसर मीडियम. दिस इज डेंसर, this is air, so this is rarer medium. Okay, light is coming from rarer medium and it is reflecting from the denser medium, whereas at point C, now this is denser medium, light is coming from the denser medium and then it is reflecting from rarer medium. अब इस केस में या दोनों केस में क्या डिफरेंस होता है याद है? नहीं? ठीक है, मैं बताता हूँ. आपने ये डायग्राम भी देखा है, और छोटा सा डायग्राम था ये, बता देता. सपोज दिस इज अ डेंसर मीडियम. ठीक है, दिस इज डेंसर and the light or the wave is coming from the rarer medium. This is rarer. When it reflects back, it reflects with a phase difference of 180 degree or pi radian. तो अगर ट्रफ है तो उसका क्रस्ट हो जाता है, क्रस्ट है तो ट्रफ हो जाता है. ये आपने कहाँ पे पढ़ा, याद है? Stationary wave. Yes, absolutely right. Compression and reflection. And then
if you talk about, say, the wave is coming from dense medium, this is incoming and this is outgoing, and then it reflects back from the rarer medium, then it reflects as it is, no phase difference. Okay? So this is something like at point B, and this is something like at point C in this figure, above figure. ये फिगर जो है हमारे इसमें, तो बी पॉइंट पे क्या हो रहा है, डेंसर मीडियम से हो रही है, तो इसमें एडिशनल फेज डिफरेंस आएगा, ठीक है, और यहाँ पे कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा. तो व्हाट आर द एक्सप्रेशन दैट वी हैव फाउंड आउट, the optical part difference equal to 2 mu d cos r, then we have to correct it. So corrected optical part difference will be equal to 2 mu t cos r minus 180 डिग्री मतलब कितना वेवलेंथ, ये वेव है सब, ठीक है, ये हो गया आपका 0, ये हो गया 360, ये हो गया 180. 180 डिग्री मतलब हाफ वेव, राइट. ये वेवलेंथ हो गया लैम्बडा, तो ये कितना हो जाएगा, लैम्बडा बाय 2. क्लियर. दिस इज माइनस लैम्बडा बाय 2. ये एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया, एक्स्ट्रा आया क्योंकि बी पॉइंट पे डेंसर मीडियम से ये रिफ्लेक्ट हो रही है, whereas at C point it is reflecting from the rarer medium, so there is no phase difference here, but there is a phase difference here, and therefore there is a path difference, क्योंकि 2 pi phase difference corresponds to the path difference of 1 lambda. Okay, इसलिए pi रेडियन के लिए lambda by 2 आएगा. Now this is the corrected optical path difference, and therefore if case 1, if this optical path difference, corrected optical path difference, say 2 mu t cos r minus lambda by 2 is equal to n lambda. n lambda किसकी कंडीशन है, ब्राइटनेस की या डायरेक्टनेस की, n lambda ब्राइट और डार्क, it is bright. Bright, and n equal to 0, 1, 2, 3, so and so. Whereas there is another condition, case 2, where this corrected optical part difference, that is 2 mu t cos r minus lambda by 2 is equal to 2n minus 1 by 2 lambda, या lambda by 2, ठीक है, 2 बाहर लिखो या अंदर लिखो, इट इज 1 and the and or plus n equal to 1, 2, 3, 4. Remember that the n starts with 0 here, whereas n starts with 1 here, because the minimum value 1, यहाँ पे 1 पुट करते, तो 2 minus 1, 1 by 2 lambda. अगर आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये क्या होगा, minus 1 by 2 lambda. And difference is never negative, डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम n की वैल्यू यहाँ 1 से स्टार्ट करते हैं. You can also write 2n plus 1 lambda by 2, whereas n starts with 0, 1, 2. इस केस में ठीक है 0, 1, 2, ठीक है. Now why am I taking here minus lambda by 2? We'll see quickly. So here I can just write 2 mu t cos r equal to, ये हाफ लैम्बडा अगर मैं इधर ले लिया तो क्या होगा, n plus half lambda, and that is equal to ये 2n plus 1 by 2, 2n plus 1 by 2 lambda. ये आएगा इसका एक्सप्रेशन. दिस इज फॉर द ब्राइटनेस. रिमेंबर ये डार्कनेस की कंडीशन थी, वो ब्राइटनेस की बन गई 2 mu t cos r के लिए. वेयर एज इन दिस केस अगर ये फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं, then taking this minus lambda by 2 on right hand side, what we get is 2 mu t cos r equal to minus lambda by 2 becomes plus lambda by 2. So 2n minus 1 by 2 plus half lambda. Clear? That is equal to 2n by 2, that is n lambda. And this is the condition for darkness.
provided here n equal to 1, 2, 3 and so on. मतलब ये आएगा लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा 4 लैम्बडा, ये सब डार्क पॉइंट आएंगे. Whereas if you talk about say n equal to 0 रख दो, so it will be half lambda. n equal to 1 रखो, 1 into 2, 2 plus 1, 3 by 2. So this is 3 by 2 lambda. n equal to 2, 2 into 2, 4 plus 1, 5 by 2 lambda. Here 7 by 2 lambda. Then 9 by 2 lambda. And so on and so forth. So if the phase difference between these 2 points, कौन से ये डायग्राम में दिखा था, ये आ गया हमें डायग्राम. D और M इसके बीच में अगर फेज डिफरेंस कितना है, अगर ये फेज डिफरेंस मतलब ये 2 mu t cos r इक्वल टू n लैम्बडा अगर आता है तो देन इट इज डार्क पॉइंट, और अगर ये ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा आता है तो ब्राइट पॉइंट. Clear? Any doubt? Any question? Anything you want to say?